So finally, I bought a GoPro Hero 11 Black, and it's amazing. Waiting for the time to pass me by. GoPro 2004 में फर्स्ट मार्केट में आए थे और इन्होंने अब तक 47% मार्केट शेयर एक्वायर कर चुका है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु बाय GoPros. कुछ लोगों को ये ज्यादा ही पसंद है और कुछ लोगों को ये पसंद ही नहीं है, बट स्टिल ये दोनों ही खरीदते हैं. वाह बेटे वाह. अगर तुम एक्शन कैमरा के मार्केट में देखोगे, द फर्स्ट ब्रांड यू रिकॉग्नाइज और एक ऐसा ब्रांड जो तुमने बहुत बार नाम सुना है, वो प्रोबेबली GoPro ही होगा. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट हाउ आई बॉट माई GoPro. सो बात शुरू होती है दिसंबर के महीने 2022. सो वी वेंट टू राइड इन ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ जुलुक एंड गेस व्हाट, आई हैड अ GoPro माउंटेड ऑन मी. वो मेरे दोस्त का था, बट बिकॉज आई हैड अ GoPro माउंट ऑन मी, आई जस्ट वांटेड टू ट्राई हाउ इट वुड बी. एंड देन बस पैक किया, लगाया एंड चल पड़े. एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ गोइंग ऑन यूट्यूब, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल राइड. इट वाज फिल्ड विद ग्रेट व्यूज एंड वेरी गुड मेमोरीज. देन वी रीच्ड होम और मैं अपने दोस्तों के साथ गया था और सब लोग को पता था कि मेरे पास GoPro था. सो एवरीबडी वांटेड टू सी द फुटेज. सो मैंने उस फाइल के साइज को देखा और मैं चौंक गया. एंड माई रिएक्शन वाज, मैं 74 GB ट्रांसफर कैसे करूँ? सो आई नीडेड एन ऑल्टरनेटिव. एंड लकीली दोस्त ने कहा कि उसे एडिटिंग आता है, चलो यूट्यूब पे डालता है. एंड देन द Juluk series was born. Rider 9993 was created and some of you guys joined from there. Thank you for 100 subs by the way. So unintentionally ये YouTube channel create हुआ, but then the dopamine system inside my head got excited by seeing the numbers on the video. And then मुझे YouTube और pursue करने की इच्छा होने लगा. And then 50,000 rupees investment was made. I bought a GoPro. So चलो इसे unbox करते हैं. Thanks for watching the video. If you like the video, press the like button. देखो मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अब तुम इन्वेस्ट कर दो. If you wanna watch the Juluk series, it will be in the description below. And if you wanna watch other videos, hit the subscribe button and the bell notification. See you guys in the next one. Peace.